Hello everyone, myself Kushali Kathiria. In this video, we discuss the HOG features. So, what is a HOG feature? Before we move on the HOG features, I want to explain the basic terms of which one is using in HOG. HOG stands for the histogram of orientated gradients. They are the derived using gradients. So, what is a gradient? Gradient that means अगर यहाँ पर आपके पास कोई एक इमेज है, ओके, सो दिस वन इज द ओरिजिनल इमेज. दे हैव black background and white object. Okay, so here our information are present and this one is the black portion. There are no information present. So if we talk about the if we talk about the horizontal gradient, so what is a horizontal gradient? That means जो हमारा horizontally जो है x axis, okay, horizontal always in x axis. So suppose कि हमारा जो horizontal gradient है वो क्या करेगा, यहाँ से enter करेगा like this. Okay, so here we have enter at zero value position. Okay, यहाँ पिक्सल की वैल्यू क्या होगी, जीरो या तो फिर ऑल पिक्सल वैल्यू. ओके, तो सपोज कि यहाँ पर मैंने 0 1 पिक्सल मैंने इमेज 0 1 किया है, तो सपोज कि मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर मेरी इमेज की वैल्यू है, पिक्सल की वैल्यू है वो 0 है, यहाँ पर भी 0, नेक्स्ट पॉइंट 0 0 0. बट जैसे ही वो इसकी बॉर्डर पर आएगा, दैट मीन्स ये वाला कर्व, ओके, तो वो क्या होगा, एकदम से 0 से लेकर अप हो जाएगा, दैट मीन्स 1. या तो फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो 0 से लेकर 255 तक, क्योंकि हम कोई भी इमेज है उसको दो तरह से डिराइव कर सकते हैं, या तो फिर 0 1 फॉर्मेट में, बाइनरी फॉर्मेट में, या तो फिर उसके पिक्सल वैल्यू में, ग्रे लेवल फॉर्मेट में. तो यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यू है वो 0 है और यहाँ पर वैल्यू 1 है या तो फिर 255 है. दैट मीन्स यहाँ पर कुछ शेप हमें मिल रहा है. दैट मीन्स ये वाला जो वाइट कर्व है वो क्या हो गया, उसका यहाँ पर चेंजेस दिख रहा है वो. दैट मीन्स ये वाली पिक्सल वैल्यू और ये वाली पिक्सल वैल्यू के बीच में एक जो चेंज है उसको हम बोल सकते हैं ये वाला कर्व. ओके, और सेम टू सेम अगर हमारा जो ग्रेडियंट है वो व्हाइट में से होकर ब्लैक में जाएगा, तो क्या होगा, व्हाइट में से ब्लैक होकर ब्लैक में जाएगा तो एकदम से पिक्सल वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी. ओके, यहाँ पर क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी, यहाँ पर क्या हो गई, डिक्रीज हो गई. तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट क्या हो गया, ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू. तो हमारे हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट जो हमारी हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट वैल्यू है वो क्या हो गई, ये वैल्यू माइनस दिस वन वैल्यू. So this one is the horizontal gradient. Same for the vertical gradient. What is a vertical gradient? Vertical gradient that means you are enter in a y-axis at the top of the image. Okay, यहाँ पर आपको देखो तो यहाँ पर आपको white portion दिखाई दे रहा है. That means you have shown the white portion because here you are the enter from the back portion to white portion. So here what is the value of black portion? Black portion value is a 0. Okay, और what is the value of white portion? White portion value is 1 या तो फिर 255. So here our vertical gradient are changed from the accidentally or immediately change from 0 to 1 or 0 to 255. That's called these are the vertical gradient. That same for this. These are the exit point. What is the exit? There are the here our gradient are from top to bottom. So here we have a face like from the white pixel image to the black pixel image. तो यहाँ पर हमारी जो gradient की वैल्यू थी और हमारी जो बाउंड्री थी वो क्या जनरेट होकर आ गई, ब्लैक. यहाँ पर एकदम से ब्लैक में से व्हाइट, दैट मीन्स यहाँ पर व्हाइट, यहाँ पर व्हाइट में से ब्लैक, दैट मीन्स एकदम से ब्लैक. ओके, यहाँ पर सेम ब्लैक में से व्हाइट तो व्हाइट बाउंड्री आएगी, यहाँ पर व्हाइट में से ब्लैक तो एकदम से ब्लैक बाउंड्री आएगी. सो दिस कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल gradient. This one is the basic keywords which one used are which are the used in the HOG. After that we derived the gradient magnitude and angle. We have derived the horizontal gradient and vertical gradient. Okay, यहाँ पर कोई एक पिक्सल है, कोई इमेज है, उस इमेज का कोई आपने एक पिक्सल ले लिया. सपोज कि मैंने ये वाला इमेज का पिक्सल है वो मैंने ले लिया. अब मुझे क्या करना है, तो उस पिक्सल दैट मीन्स ये वाला पिक्सल है, ये पिक्सल है. ओके, ये जो रेड कलर का है ये वाला पिक्सल यहाँ पर है. सपोज कि मुझे उसके क्या करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों जो ग्रेडियंट है वो चाहिए. दैट मीन्स उसका ऊपर से नीचे तक आने का, लेफ्ट से राइट तक जाने का जो पिक्सल वैल्यू है वो चाहिए ये पिक्सल वैल्यू के साथ. ओके,
तो यहाँ पर ये पिक्सल वैल्यू के साथ कुछ ऐसा कुछ ग्रेडियंट मुझे मिला है, लाइक हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट इज 17, entry point is 70, exit point is 120. Same for the vertical gradient. Vertical in the entry point we have a vertical gradient is a 100 and exit point is a 50. So what is the difference between what is the difference between gradient in x-axis? So x gradient value in x direction is 120 minus 70, or gradient value of y direction is 100 minus 50. Okay, so here 120 minus 70 and 100 minus 50. So this one is the gradient value. Okay, so what is the gradient value? Gradient value of x-axis is a 50 and gradient value of y-axis is also 50. So what is the gradient value? Gradient value is nothing but this one is the subtraction from the neighbor pixel. Neighbor pixel of x direction, that is the entry point. This one is the exit point. So exit minus entry point of x. This one is the entry point of y and this one is the entry point exit point of z. Sorry, y. So gradient value is y direction gradient value is exit minus entry. Okay, so this called so we have x and y direction value are the 50 comma 50. Now we identify the gradient magnitude. What is a formula for that? Gradient magnitude, that means under root g of x plus x square plus g of y square. What is the g of x? G of x, that means gradient value of x. What is the gradient value of x? That is a 50. So here we have a right of 50. And what is the value of g of y? G of y, that means gradient of y direction or y axis. So this one is the 50. So 50 square plus 50 square in plus both are the summation, and this summation is derived into root node root. Okay, so here we find the gradient magnitude as a 70.1. We also find the gradient angle. Okay, what is the gradient angle? That means tan inverse upon g of y upon g of x. जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक में जो हमारा tan का फॉर्मूला आता है वही है. दैट्स मीन magnitude angle is equal to tan inverse g of y upon g of x. Okay, so what is the value of g of y? 50 upon 50, that is a 1. So tan inverse 1 is equal to 45. Okay, so our angle is a 1 and magnitude is a 70.1. So this one is the simple magnitude gradient magnitude and gradient angle for the this pixel. Okay, so what is ओरिएंटेड ग्रेडियंट दैट मीन्स जो हमने ये जो ग्रेडियंट डिराइव किया है वो. बट व्हाट इज द ओरिएंटेशन दैट मीन्स थीटा एंगल. जो उसका ओरिएंटेशन है, जो उसका ग्रेडियंट है, जो उसकी डायरेक्शन है, ग्रेडियंट दैट मीन्स नथिंग बट अ डायरेक्शन. जो उसकी डायरेक्शन है उसका एंगल कौन सा है. सपोज के यहाँ पर एक एग्जांपल दे देती हूँ. सपोज के आपके पास ओके ये कुछ है, ये एंगल पर कुछ है. ओके, so what is the gradient that means this sign. And what is the magnitude, angle that means this one is the angle. Same for the this one is the gradient, okay, in a y direction, and this one is the angle for same. Okay, so this one is the simple gradient and magnitude for the our image. Now we move on the histogram orientation gradient. Okay, so what is the histogram orientation gradient? Histogram orientation gradient, that means we have already know, I have already discussed the oriented that means direction, theta angle. Okay, angle of any direction, और gradients that means direction. तो अब हमें क्या करना है, थीटा एंगल के साथ जो डायरेक्शन था उसका हमें क्या करना है, हिस्टोग्राम आइडेंटिफाई करना है. दैट मीन्स उसके फीचर्स हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है. ओके, सो हियर we consider the below image of the size 180 cross 280. Let's us take a detailed look at how the HOG features we will be create. Okay, so how to create HOG features. Okay, so let's discuss. They have multiple steps. First step is the histogram orientation gradient. Is the first step is the
pre-processed step. What is a pre-processed data? Pre-processed data, that means we want to convert our image, large size of image into particular size of image, because here we want to divide our image into some kind of the patches. Okay, so what is a patches? Patches, that means 8 by 8, 16 by 16, 32 by 32. That's called a patches. Okay, so here we want to pre-process our data. What is our original image size? Original image size is a 64 height, and 64 width, and 128 is a height. So here we want to convert our image into 64 into 128 into a particular resize image. So here we have to convert our image into 8 by 8 and 16 by 16 patches for the extract the features from our this kind of the image. Okay, so let's discuss. This one is the pre-processed data of our histogram first stage. After that, कैलकुलेटिंग द ग्रेडियंट्स. हाउ टू कैलकुलेट द ग्रेडियंट्स, जो मैंने यहाँ पर आपको दिया है, लाइक ये वाला जो मैंने समझाया कि भाई कैसे ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड और कैसे ग्रेडियंट एंगल है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे. तो यहाँ पर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो सेकंड वन इज द कैलकुलेटिंग ग्रेडियंट डायरेक्शन एक्स एंड वाई. The next step is to calculate the gradient for the every pixel in an image. Gradient are small changes in x and y direction. Here I am going to take a small patches from the image and calculate the gradient on that. Here I consider this kind of the patches like 5 cross 5 patches. Okay, so here I want to derive the direction for the 1 pixel of image. Suppose कि मैंने 5 cross 5 लिया है, उसका कोई एक पिक्सल, सपोज कि मैंने वो 85 सिलेक्ट किया है. ओके, अब 85 का मुझे क्या करना है? उसकी ग्रेडियंट आइडेंटिफाई करनी है, साथ में साथ उसका एंगल भी आइडेंटिफाई करना है. सो हाउ टू आइडेंटिफाई द ग्रेडियंट ऑफ 89 एंड 85 एंड हाउ टू आइडेंटिफाई द ग्रेडियंट angle for the 85 value. Okay, so here first we consider the x-axis, that means 89 minus 78. So here we have received x direction gradient. So here we have received 89 minus 78 is almost 11. Okay, and what is the y gradient? Y gradient, that means 68 minus 56. So here we have received the direction x gradient direction, y gradient direction is a 8. Now we want to, this one is the gradient of direction x and y. Now we want to identify the magnitude and angle. Okay, so how to identify the magnitude and angle? So first of all, what is the magnitude value? Magnitude value, that means under root of gx square plus gy square. What is the gx? Gx is a 11 and gy is a 8. So 11 square plus 8 square, okay, is equal to in under root. Okay, so what is the value of gradient magnitude? Gradient magnitude is a 13.6. Okay, so this one is the total gradient magnitude. Now we identify the total now we identify the magnitude orientation or magnitude angle. So how to identify, that means tan inverse. अगर आपको tan inverse नहीं लिखना है तो a tan लिख सकते हो. Okay, so what is the value? How to find the angle value? Angle value is a tan inverse g of y upon g of x. What is the g of y? 8 upon 11. So a tan inverse 8 upon 11 is almost 36 angle. So here we receive the angle as a 36 and our magnitude is a 13.6. Now we create the histogram using a gradients and orientation. Now here we put the value of the magnitude and orientation. Here we took a beam size. Beam size is a 20 size. Scale image 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, up to 160. So here our magnitude value is a 13.6. Okay, so 13.6 is derived from 20 beam size. So here we use 13.6 as a derived. But here calculate the histogram of gradient in 8 by 8 cells. That means जो हमने HOG features जो हमने generate किया है
जो हमारा ये वाला HOG फीचर्स हमने जनरेट किया है, ओके, वो पूरे के पूरे इमेज के लिए नहीं है, ओके, दैट मीन्स कि हमारी पूरी की पूरी इमेज के लिए नहीं, तो हमें क्या करना होगा, दैट मीन्स वी वांट टू कन्वर्ट अवर histogram, we want to generate our histogram features, histogram HOG features for our whole image. So here we derived our images, divide our images into 8 by 8 cell, okay. So we got 9 by 1 histogram pixel value, okay. So here we want to create our features for the whole image, that's why we divide our image into 8 by 8, 16 by 16 or 32 by 32 pixel value, and we get a 9 by 1 matrix for the each cell and generate the histogram for the same, okay. So this one is also for the 16.16. Now we normalize our gradient, like we have generate our histogram for the 8 by 8 cell. अब हमें क्या करना है, उसको मर्ज करना है, दैट मीन्स ये जो 8 by 8 है ना, ये जो 8 by 8 है ना, एक एक पिक्सल उसको हमें क्या कर देना है, मर्ज कर देना है, दैट मीन्स 8 by 8, 8 by 8, 8 by 8, 8 by 8, ओके. तो 16 by 16, ओके. यहाँ पर क्या होगा, एक 8 यहाँ पर है, दूसरा 8 x डायरेक्शन में, दैट मीन्स ये 16, ओके. एक 8 यहाँ पर है और दूसरा 8 यहाँ पर है, तो क्या हो गया 16. तो 16 by 16 अब हमें क्या करना होगा, मर्ज करना होगा, दैट मीन्स नॉर्मलाइज्ड करना होगा. बिफोर वी अंडरस्टैंड हाउ इट इज डन, इट इम्पोर्टेंट दैट व्हाई वी डू फर्स्ट. It is already we have already HOG features for the 8 by 8 cell, but जो हमारी इमेज है, यहाँ पर मैंने जो डॉगी की जो इमेज दी है, यहाँ पर कुछ इमेज पिक्सल में कुछ पिक्सल की वैल्यू क्या है, लाइट है, कंपेयर टू यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है. यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाला जो कर्व है, या तो फिर जो डॉगी का बॉडी शेप है, डॉगी का जो कलर है वो क्या है, ब्राउन कलर है, ओके. और यहाँ पर उसका बैकग्राउंड क्या है, व्हाइट है, तो उसका हिस्टोग्राम भी क्या बनेगा, ये वाले पैचेस का हिस्टोग्राम लाइट होगा कंपेयर टू ये वाले पैचेस का. तो यहाँ पर जो हिस्टोग्राम जनरेट होगा और यहाँ पर जो हिस्टोग्राम जनरेट होगा वो क्या होगा, कंपेयर टू लाइट होगा. तो हम क्या करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे कि भाई सारी की सारी जो पिक्सल वैल्यू है, जो ओवरऑल क्या कर देना है, लाइट कर देना है. सो हियर वी यूज्ड 16 by 16 and we normalize our histogram, okay. So this one is the concept of the histogram that will be normalized into a 8 by 8 to 16 by 16. Now we complete our feature. Now we merge our whole image or whole histogram image in a one image features for the complete image. We are here final step of the generating HOG features for the image. So far here we generate a 16 by 16 blocks for the each image and histogram for the all of this. Now we combine all features into a final image. So here we generate our histogram features like that. So this one is our original image and this one is our histogram oriented gradient, okay. So this one is the features for that. After that, this one is a few example about that. So here we want to convert our image into HOG features. So first of all हम क्या करेंगे, रिसाइज करेंगे. रिसाइज करने के बाद उसका 8 by 8 में पैचेस करेंगे, 8 by 8 या तो 16 by 16 या तो 32 by 32 में. आफ्टर दैट हम उसका 8 by 8 का मैग्नीट्यूड और उसका एंगल आइडेंटिफाई करेंगे, दैट मीन्स डायरेक्शन और उसका एंगल आइडेंटिफाई करेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको नॉर्मलाइज करेंगे. उसको क्या करेंगे, 8 by 8 पिक्सल है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे 60 by 16, दैट मीन्स 4 8 by 8 पिक्सल को कंबाइन करके 16 by 16 के एक पिक्सल बनाएंगे. और उसके बाद उसको क्या करेंगे, उसका जो हिस्टोग्राम है उसको नॉर्मलाइज करेंगे, ओके. नॉर्मलाइज करने के बाद जो हमारा 16 by 16 का जो ऑल पैचेस है उसको क्या करेंगे, अगेन कंबाइन करेंगे और हमारा क्या बनेगा, इमेज जनरेट होकर आ जाएगा. दिस वन इज द basic version. Like first of all we divide our image into 8 by 8. After that we identify the magnitude and angle for the same 8 by 8 pixel, okay. After that हमें क्या करना होगा, वो करने के बाद we want to convert our 8 by 8 pixel into 16 by 16. So here we convert our image from the 8 by 8 pixel to 16 by 16. So here we normalized our image into a particular big size of image. Now
we want to normalize our histogram, and after that we combine all 16 by 16 patches in a one image and we create a histogram for the same. So this one is the example for the 8 by 8 patches, and after that this one is the 16 by 16, and we create whole our HOG features for our whole image. Another example for the same, this one is the image of the Kalpana Chawla. This one is our input image and this one is our histogram image. Same procedure are follow in all kind of the image. So this one is the another example for that. This one is the one lady that he took one book for that book in her hand, and we generate our histogram oriented gradient. So we have a successfully generate for that. This one is the step by step generation of HOG features. First we convert our image into resize. After that we identify the magnitude and angle of the gradients. After that we apply 8 by 8 patches and we generate our histogram, and we normalize our histogram into 16 by 16 or 32 by 32, and we generate our HOG features for the same image. Okay, so this one is the example or introduction, or not introduction, but this one is the HOG features for the image processing. This one is the few example, and this one is the briefly introduction about the HOG features. Thank you.